Hello students, welcome to the next lecture on the Legendre equation. Today I will explain you how you can find the solution of the Legendre equation. Myself Dr. Harish Garg, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find the playlist of the ordinary differential equation. Last lecture was on the Legendre equations and its motivations. तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, we will cover all those lectures one by one. The last lecture was on the about the Legendre equation. Today I will explain you how you can find the solution of the Legendre equations. After that we will see Rogers formula, generating functions, orthogonal, and the most important lecture is once we will cover the complete theory lectures and I will explain you how you can solve the questions in just the 15-second time period. इसलिए मैंने कहा यू मस्ट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. जैसे मैं ये सारे लेक्चर अपलोड करूं यू विल गेट दी notifications. Now, as I mentioned you, we already discussed the concept, features, and the intuition behind the Legendre equations. Today, we will see how we can find the solution of the Legendre equations. If I consider the equation number 1 is my Legendre differential equation, then clearly say x is equal to 0 is the ordinary point. Fine. And because it's a polynomial, it's a differential equation, so x is equal to 0 is my ordinary point. And whenever we will get the ordinary point, which method will be applicable to find the series solution? We can find the power series method for finding its solution. For more details about the power series methods, ordinary point, you can again watch my same playlist and you can see the Frobenius methods, PY question of the power series, example of the ordinary and the power series method. तो क्या करते हैं power series में? We can take one trial solution which is in terms of the polynomial k varies from 0 to infinity ak x की power k, where ak are my arbitrary constants and your target is to find the values of the ak's. Your target is to find the values of the ak. I can substitute the value of the y in equation number 1, but for that you need y prime and y double prime. So can you calculate the value of the y prime? Differentiate with respect to x, so that will be k ak x की power k minus 1. Now since x is equal to 0 is my ordinary point, तो अगर मैं यहाँ k 0 लिखता हूं तो ये नंबर क्या बन जाएगा 1 over x. Then 0 is not the ordinary point, तो उसको रिमूव करने के लिए I have to take as x is equal to 1. Similarly, you can find the second derivative. Substitute both the values in equation number 1. Fine. Now you can open the bracket. पहले इस 1 के साथ bracket open कर दो. That will give you the k minus 1 ak x की power k minus 2 minus. Now you can multiply with the x square into x की power k minus 1. You will get k minus 1 ak x की power k. Similarly, if you multiply x with the k minus 1, you will get as a x की power k. Fine. I can write as a 0 is 0x plus 0x square and then so on. I can equate the coefficient of the x की power 0, x की power 1, x की power k on the both side. So let's firstly for the x की power 0. Look at this case. यहाँ x की power 0 कब बनेगा? यहाँ x की पावर 0 कब बनेगा? When you substitute k is equal to 2, तभी तो x की पावर 0 बनेगा. I can substitute, that's a 2 minus 1 is 1 into a of 2. यहाँ x की पावर 0 कब बनेगा? When you substitute k is equal to 0, but k start from the 2, तो यहाँ पे कभी नहीं बनेगा. Similarly for this case, k is 0 but k start from the 1, and in this case k must be 0, so that expression becomes n plus 1 a naught. Similarly, when you take x की power 1, fine, ये x की power 1 कब बनेगा? When you substitute k is equal to 3, so that will be 3 minus 1 2 into a 3. यहाँ पे k की वैल्यू 1 कब बनेगी? When you substitute k1 but it's a k2, तो ये कभी नहीं बनेगा. यहाँ बन जाएगा आपका k is equal to 1. Fine. और यहां पे k1 का बनेगा when you substitute n is equal to k is equal to 1. Fine. Now
From the first line, you can find the value of the a2, that will be minus n plus 1 divided by 2 of a naught. And from the second equation, you can find the value of the a3. इसमें से ये क्या बन जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 माइनस ऑफ 2, तो ये फाइन, डिवाइडेड बाय 6. और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर प्लस n माइनस 2, इसके फैक्टर बना लो, n प्लस 2 n माइनस 1 ऑफ a1. फाइन, तो मैंने फैक्टर बना लिया. क्लियर. नाउ यू कैन इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ द x की पावर k. यहां x की पावर k कब बनेगा, व्हेन यू सब्स्टिट्यूट k टू बी k प्लस 2. तो यहां पे रिप्लेस कर दो, कहीं पे भी k लिखा हुआ है वहां पे k प्लस 2, तो ये k प्लस 1 बन जाएगा यहां पे a ऑफ k प्लस 2. यहां पे x की पावर k कब बनेगा, ऑलरेडी k लिखा हुआ है, सो दैट विल बी माइनस k माइनस 1 a k. इट इज ऑलरेडी x की पावर k माइनस 2, और यहां पे x की पावर k के लिए ऑलरेडी लिखा हुआ है. फाइन, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a ऑफ k प्लस 2. तो ये आपका x की पावर k है. फाइन, a की पावर k कॉमन ले लो. फाइन, एंड देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ a k प्लस 2. यू कैन ओपन द ब्रैकेट, k स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस k माइनस n डिवाइडेड बाय k प्लस 2 k plus 1 of a k. You can take k minus n is a common, k plus n plus 1 divided by k plus 2 k plus 1 of a k. Clearly say here the left hand side is a k plus 2, right hand side is my a k. The difference equation is jump by the 2 units. इसका मतलब अगर आप a0 निकालोगे, after that you will get as a a2, after that you will get a4 and so on. On the other hand, if you find the value of a1, then you will get a3 and then a5 and so on. Fine, and this equation is called as the recurrence relation. Fine. Now since k is my greater than equal to 0, I can substitute the value of the k is equal to 0. You will get the value of a2. When I substitute k is equal to 1, you will get the value of the a3 and so on. So initially I can substitute the even k, you will get a2, a4 and so on. When you substitute, how you can find the a2? I can take k is equal to 0. तो k 0 fill करो, minus n plus 1, 0 plus 2 is a 2 into 1 of a naught. a4 कैसे बनेगा, when you substitute k is equal to 2, you will get 2 minus n, 2 plus 1 is 3, divided by k is equal to 2, 2 plus 2 is a 4, 4 into 3 of a2 and so on. Clear? I can substitute the value of the a2 at this point. So you will get minus n plus 1, 2 minus n and 3n plus 3 divided by 4 into 3 into 2 into 1, that is my 4 factorial. Fine. और ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाले में से माइनस कॉमन ले लेता हूं, n minus 2, then it becomes a positive. Clear? I can substitute the value of the a4 at this point. You will get denominator is 6 into 5 into 4 into 3 into 1, that's a 6 factorial. ऊपर क्या आ जाएगा, यहां से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं. फाइन, इट्स n minus 4, तो माइनस n minus 4, पहले नेगेटिव वाली वैल्यू लिख लेता हूं. फाइन, देन n plus 1, n plus 3 and n plus 5 into a naught. क्लियर? तो सिमिलरली आप लास्ट टर्म क्या लिख सकते हो, यू कैन सी इट्स नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, सो आई कैन राइट एज ए, फाइन, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इफ इट इज अ 6 देन इट्स अ 6 फैक्टोरियल, इफ इट इज 4 देन इट्स अ 4 फैक्टोरियल, एंड इफ इट इज अ 2m देन इट्स अ 2m फैक्टोरियल. यहां देखिए पावर क्या है आपके पास, ये नेगेटिव वाली पावर्स हैं और ये आपकी पॉजिटिव वाली है. अगर ये 6 है तो ये 5 है, इसका मतलब ये लास्ट टर्म n plus 1 n plus 3, तो ये कहां तक जाएगी आपकी, 6 है तो 5 है, 4 है तो 3 है, तो अगर ये 2m है तो 2m minus 1, और यहां पे 6 है तो 4 तक जा रहा है, 4 है तो 2 पे जा रहा है, तो 2 बार डिफरेंस होगा आपके पास, तो इसका मतलब n minus 2 2m minus
Similarly, I can find the value of the a1, a3 and so on by substituting the k is equal to 1, 3 and 5. तो k की वैल्यू जैसे मैं 1 फिल करूंगा, I can get as the a3, so that becomes 1 minus n. Find 2 plus n. When k is equal to 1, it's a 3 into 2 of a1. और आप ध्यान रखो, ये वही वैल्यू थी जो आपने इनिशियल में a3 निकाला था. Similarly, you can find for the k is equal to 3, k is equal to 5 and so on. यहाँ पे k है. Fine. Again, I can substitute a3 value at this point. Fine. और यहाँ से जो वैल्यू आएगी, I can substitute the a5. You will get the expression of this quantity. Similarly, you can write is a a7 is a 7 factorial. a5 is a 5 factorial. So if it's a 2m plus 1, then it's a 2m plus 1 factorial. प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. फाइन. अगर ये 7 है तो ये 5 तक है. फाइन. तो यू कैन राइट एज ए 2m and n minus 1, 2n and then so. I can substitute all these a0, a1, a2 into the required expressions. a2 की वैल्यू क्या थी आपकी? n plus 1 over 2 factorial a नॉट x square और ये a नॉट ऐसे ही आपके पास. फाइन. Plus, similarly, I can find the value, substitute the value of the a3 in terms of a1, a5 in terms of the a1. तो यहाँ पे सारी वैल्यू सब्सटीट्यूशन करके कॉमन ले लेता हूँ a नॉट एंड a1. फाइन. सो आई कैन राइट द फर्स्ट एक्सप्रेशन टू बी द y1, second is my y2. Where y1 is my even terms, you can clearly say it consists of the even terms, while y2 is consist of my odd terms x3, x5 and so. Is it okay? और आप ये भी कर सकते हो, इस 1 को छोड़ भी सकते हो आप. फाइन. बिकॉज जैसे आपने 1 को छोड़ोगे तो ये कांस्टेंट में इन्वॉल्व हो जाएगा a1. क्लियर. तो आप इसको स्किप कर सकते हो, चॉइस आपकी है. देयर इज नो इश्यू फॉर दैट. इसको आप समेशन की फॉर्म में लिख दो. यू कैन फाइंड द जनरल टर्म इज फाइन. और ये कहां से लिखा? लुक लाइक से जैसे हमने ये बनाया था टर्म. फाइन. दिस इज फॉर द ऑड टर्म्स. इवन के लिए इसे पहले बनाया. यू कैन राइट इन द इवन एंड द ऑड क्वांटिटी. फाइन. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज, कैन यू से द सॉल्यूशन यू हैव ऑब्टेन्ड इज अ जर्नल सॉल्यूशन? जर्नल सॉल्यूशन, अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन रिमेंबर हो, c1 y1 plus c2 y2, when you can say this is a journal solution only when y1 and y2 are my li. So if I prove that y1 and y2 are li, then it is a journal solution. कैसे प्रूफ करोगे? y किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी फंक्शन को लीनियरली इंडिपेंडेंट, इफ यू टेक द रेशियो विच इज नॉट कांस्टेंट. फाइन. एक तो ये मेथड आपके पास. और सेकेंड मेथड इज यू कैन फाइंड द Wronskian of the y1 and y2. Find how you can find the Wronskian. y1, y2, y1 prime, y2 prime, that must be non-zero at any point. Fine. आपका पॉइंट कोई भी ले लो. लेट्स से द पॉइंट इज माई 0. अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, देन वी कैन से इट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट. नाउ बिकॉज द y1 and y2 clearly say the y1 involve even powers. Fine. Like x की पावर 4, x की पावर 2 and so on. While y2 involvement of the odd powers like x cube, x and so on. But if you take the ratio, that क्या होगा? x4 के साथ x cube कट जाएगा, लेकिन must be the function of the x. So that must be the function of the x. What does it means? Which implies not constant. तो अगर ये constant नहीं है, that implies the y1 and y2 are my linearly independent. Second point, these y1 and y2 which you have obtained in terms of the in terms of the infinite series, you can clearly prove by using the ratio test. Fine. By using the ratio test, this y1 is my convergent for all x such that mod of x is less than 1. Similarly, you can prove that y2 is my convergent for mod of x is less than 1, and that you can do it by own as an exercise. Fine.
You can pause the video and then you can do it by on. Now since y1 and y2 are Li, therefore your solution a0 y1x plus a1 y2 is the general solution of the Legendre equation over the domain mod x is less than 1. Fine. Make sure y1 is called as the first solution. It is also known as the Legendre solution of the first kind and it is denoted by P and X. While y2 is called as the Legendre equation of the second kind and denoted by Q and X. Therefore, I can write the general solution because they are Li. General solution is defined as a0 P and X plus a1 Q and X, which is called as the Legendre function. But if I ask you, can you say the Pnx and the Qnx are both polynomials or infinite series? What is the difference between the polynomial and infinite series? Consider, अगर मैं एक polynomial ले रहा हूँ y is equal to 1 plus x square and second ले रहा हूँ 1 plus x square plus x cube and so on, then clearly say the first one is my polynomial because it is terminated after the finite terms, while the second one is my infinite series. Fine. तो क्वेश्चन आपके लिए यही है, क्या ये Pnx और Qnx मतलब जो ये आपके पास y1 एंड y2 आए, ये आपका Pnx है एंड दिस इज माय Qnx, क्या ये दोनों पॉलिनोमियल हैं, क्या ये दोनों इनफाइनाइट सीरीज है? एंड दैट डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ द n इन द गिवन Legendre इक्वेशन. इफ n इज माई इंटीजर, कुछ भी हो सकता है, n 2 हो जाए, 4 हो जाए, 3 हो जाए, 7 एंड सो ऑन, देन exactly one of the Pnx or Qnx, exactly one of them is a polynomial, other is my infinite power series, and उसको हम बोलते हैं nth Legendre polynomial. For the different value of the n, we will get the different Legendre polynomials. But what is the Legendre polynomial Pnx? इसकी detail, what is the value of the, if you consider n is 2, what is the value of the P2, what is the value of the P3 and so on. For that we will discuss our next lecture in detail about the Legendre polynomial. Fine. Till then you can subscribe my YouTube channels and like and comment on this video as well. I hope you have really enjoyed these sessions. Best of luck students. Happy learning always.